नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 6 विषय हिंदी काव्य 2 एक जगत एक लोक जेनो साहित्य प्रकार है कविता भाग 1। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 6 खोलीने तैयार राखे। तो सौ प्रथम आपणे आ काव्यनु श्रवण करीशुं अने साथे तमारे आ काव्य गावानुं पण छे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी, 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, 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 समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान, घर घर में गूंज रहा निशिदिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान। काव्यનું શ્રવણ કર્યા પછી આપણે હવે આ કાવ્યની સમજૂતી મેળવીશું।
કે પ્રકૃતિ કે તત્વ હમ સબકે લીએ હે, પ્રકૃતિના તત્વ છે એ બધા માટે હોય છે. ધરતી છે, આકાશ, પૃથ્વી, ધરતી સમાનાર્થી શબ્દ છે. આકાશ, હવા, પાણી, સૂર્ય, ચંદ્ર આ બધા માટે છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ છે નહીં, બધા માટે એક સરખું છે. હમ સબકો સમાનતા સે રહેના હે, બધા આપણે બધાએ સમાન રીતે કોઈ પણ પ્રકારનો ઊંચ કે નીચ ભાવના રહિત સમાન રીતે રહેવાનું છે. बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है, કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર પ્રેમથી રહેવાનું છે. आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है, कि આજે મનુષ્યના જે વિચારો છે એ પૂરતા જ सीमित થઈ ગયા છે. इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की सकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है, कि આ કાવ્યમાં રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાની જે સકીર્ણતા છે એમાંથી વધારે આગળ વધીને વિશ્વ બંધુત્વની જે ભાવનાનો વિકાસ કરવાનો છે એ વાત અહીં રજૂ કરવામાં આવી છે. કે यह संसार बहुत बड़ा है, આ સંસાર खूब ज मोटो छे. संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियाँ है, कि आ संसार में घणा बधा देश है, घणी बधी जातिओ रहे छे. सब एक ही धरती पर रहते हैं, अलग अलग छे छतां बधा एक ज धरती पर रहे छे. धरती सबकी माता है, आ धरती छे ए बधानी माता छे. इसलिए सब भाई भाई है, एटला माटे दरेक लोको छे ए भाई भाई छे. इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है. आ काव्य में विश्व बंधुत्वनी भावना रजू करवामां आवेली छे. त्यार पछी आ चित्र में तमे जोई शको छो कि दर्शावे छे कि आ संसार एक ज छे. त्यार पछी छे एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. तो अहीं आपणे पहला शब्दार्थ जोईए. जगत, जगतनो अर्थ थशे दुनिया संसार, अने लोकनो अर्थ थशे दुनिया विश्व. सबका है एक मान, मान यानी सम्मान आदर, माननो अर्थ थशे सम्मान अथवा आदर. एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, भूमि नो अर्थ थशे धरती जमीन. प्रथम बे पंक्ति में कह्यु छे कि एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. यह संसार एक मानव लोक है, आ संसार से एक मानव लोक छे. इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है, कि आ दुनिया में रहनारा सौ लोको कोईपण प्रकारना लोको होय, अलग अलग धर्मना अलग अलग जातिना, गरीब धनवान रोगी निरोगी बधा एक समान आदर अने मानना अधिकारी छे. एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, कि रात्रे एक ज चंद्र छे ई आखा संसार में पोतानी चांदनी छे ए रेलावे छे. अलग अलग भाई देश फरे तो अलग चंद्र, कि भाई गाम फरे कि भाई एक गाम में बीजा गाम में जाए एटले अलग थी जाए, एवं कशुं जोवा मळतुं नथी. रात्रे एक ज चंद्र छे ई आखा संसार ने पोतानी चांदनी रेलावे छे फैलावे छे. एक सूर्य, तो अहीं कहेवानो अर्थ ए छे कि दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. दिवस में एक ज सूर्य समग्र संसार ने प्रकाशित करे छे. दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. एक भूमि आसमान, हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं,
કે અહીં કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશની નીચે રહીએ છીએ. અલગ અલગ વ્યક્તિઓ માટે અલગ અલગ આકાશ કે ધરતી હોતી નથી, બધા માટે સમાન જ છે. એટલા માટે પ્રથમ બે પંક્તિમાં કહેવામાં આવેલું છે कि यह संसार एक मानव लोक है. इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं. रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. ત્યાર પછીની પંક્તિઓ છે एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण. તો સૌપ્રથમ આ ત્રણેય પંક્તિઓના આપણે સમાનાર્થી શબ્દ જોઈએ, તેના અર્થ જોઈએ. તેજ, તેજનો અર્થ થશે પ્રકાશ. અહીં તેજનો અર્થ થશે પ્રકાશ. દેહ, દેહ એટલે શરીર. દેહનો અર્થ થશે શરીર. ત્યાર પછી રક્ત, રક્ત એટલે ખૂન. હિન્દીમાં ખૂન અને આપણે ગુજરાતીમાં તેને લોહી કહીએ છીએ તે. રક્ત યાની ખૂન. અસ્થિ, અહીં અસ્થિનો અર્થ છે હડ્ડી, હાડકાં. અસ્થિ યાની હડ્ડી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે પ્રાણ. પ્રાણનો અર્થ થશે જીવ. પ્રાણનો અર્થ અહીં થશે જીવ. તો આ ત્રણ પંક્તિમાં શું કહેવા માગે છે કે હમે મિલને વાલા પ્રકાશ, तेज यानी प्रकाश, हवा और पानी एक ही है. કે દરેકના ઘરમાં અલગ અલગ રંગનું પાણી આવે છે? ના, બધાના ઘરમાં એક સરખું જ પાણી આવે છે. હવા પણ એક સરખી. સૂર્યનો પ્રકાશ એક ઘર ઉપર જ પડે છે એવું છે? ના, એ બધાને એક સરખો જ પ્રકાશ આપે છે. એટલા માટે કહ્યું છે कि हमें मिलने वाला प्रकाश हवा और पानी एक ही है. हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. અહીં કહે છે કે હમ સબકે જીવન મેં સુખ દુઃખ બી એક જૈસે. દરેકના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવતા જ રહે છે. કોઈ એક વ્યક્તિના જીવનમાં માત્ર સુખ જ હોય અને એક વ્યક્તિના જીવનમાં માત્ર દુઃખ જ હોય એવું હોતું નથી. દરેકના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવ્યા જ કરે છે. હમારે શરીર એક જૈસે હે. એક દેહ, દેહ એટલે શરીર, કે શરીરની જે રચના છે, એની જે બનાવટ છે એ દરેકને એક સરખું જ છે. દરેકને બે હાથ, બે પગ, બે આંખ આપવામાં આવેલી છે. એટલા માટે અહીં કહ્યું છે કે હમારે શરીર એક જૈસે હે. એક રીતે જ તેની બનાવટ કરવામાં આવેલી છે. એક રક્ત, હમ સબકે ખૂન કા રંગ એક જૈસા હે. કોઈનો રંગ લાલ, કોઈનો લીલો અને પીળો જોવા મળે છે? ના, દરેક કોઈ પણ ધર્મના હોય, કોઈ પણ જાતિના હોય, કોઈ પણ દેશના હોય, એના શરીરનું જે લોહી છે, રક્ત છે, એ કેવા રંગનું હોય છે? લાલ. એટલા માટે કીધું હમ સબકે ખૂન કા રંગ એક જૈસા ही है. एक अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, कि हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है. हमारे शरीर की बनावट भी एक जैसी हड्डियों से ही हुई है. एक प्राण, हमारे प्राण भी एक जैसे है. हमारे जीव भी एक जैसे ही है. તો અહીં ત્રણ પંક્તિઓમાં કહે છે કે આપણને મળતા પ્રકાશ, હવા, પાણી એક જ છે. એટલું જ નહીં, આપણા સૌના જીવનમાં સુખ દુઃખ પણ એક સમાન જ છે. આપણા શરીરની રચના એક સમાન હાડકામાંથી જ થઈ છે. આપણા પ્રાણ પણ એક સરખા છે. ત્યાર પછી પેજ નંબર 7 પર हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान. તો સૌ પ્રથમ આપણે
આ પંક્તિઓના શબ્દાર્થ જોઈએ. હર્ષ, હર્ષનો અર્થ થશે અહીં આનંદ. હર્ષનો અર્થ થશે આનંદ. રાગ, અહીં રાગનો અર્થ થશે ગીત. હર્ષ ભરે ગાયે હમ રાગ સુહાને, રાગ યાની ગીત. સુહાને, સુહાને સુંદર, સુહાનેનો અર્થ થશે સુંદર. समता और ममता के गीत तराने, समता यानी समानता, बराबरी, कोई पण प्रकारना भेदभाव रहित. समतानो अर्थ थशे समानता, बराबरी. ममता, ममतानो अर्थ थशे प्रेम. ममतानो अर्थ थशे અહીં પ્રેમ. ગીત તરાને, તરાનેનો અર્થ થશે ગીત, ગાવું, ગાના, ગીત अथवा गाना. घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान. निष्दिन, दिन और रात. निष्दिन नो अर्थ थशे दिन और रात. यह मधुर गान, मधुर यानी मीठा. तो आ पंक्तिओं में कहेवामां आवेलुं छे कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान. तो आ पंक्ति में कवि कहे छे कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, सुंदर गीत गाए. જ્યારે લોકો છે એ વધારે ખુશ હોય છે એટલે તેઓ ગીત ગાવા લાગતા હોય છે. તમે જોયું હશે, તમે પણ ઘણીવાર ગીત છે ગાતા હશો. એટલા માટે કીધું છે કે હમ આનંદિત હોકર સુંદર રાગ છેડે, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए. समता और ममता के गीत तरानेનો અર્થ અહીં કહેવામાં આવેલો છે कि हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए. रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे. અહીં કવિ કહે છે કે કોઈના ઘરમાં દુઃખ છે એ આવે નહીં, દરેકના ઘરમાં ખુશીઓના ગીત છે એ ગવાય. એટલા માટે કહ્યું છે કે રાત દિન ઘર ઘર में यही गीत गूंजे. हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है. અહીં આ પંક્તિઓમાં કવિ કહે છે કે આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાગ છેડીએ છીએ, સુંદર રાગ ગાઈએ છીએ. આપણે સમાનતા ઓર પરસ્પર પ્રેમના ગીતો ગાઈએ છીએ. દિવસ રાત ઘર ઘરમાં એક ગીત ગુંજે, ખુશીઓના ગીત ગુંજે. એકબીજા સાથે ક્યારેય પણ ઝઘડો ન થાય, લડાઈ ન થાય, એ રીતે પરસ્પર પ્રેમથી સાથે રહીને ગીતો ગાવાના છે. દિવસ રાત ઘરમાં એ ગીત ગુંજે કે આપણે સૌ એક જગત તેમજ એક લોકના નિવાસી છીએ. આપણે એક સમાન આદર અને માનના અધિકારી છીએ. ત્યાર પછીની પંક્તિઓ છે राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान. तो हवे आपणे आ पंक्तिओना शब्दार्थ जोईए. राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा. ऐक्य एटले एकता. ऐक्यनो अर्थ थशे અહીં एकता. कर्म, कर्म यानी काम. प्रगति, प्रगतिनो अर्थ અહીં થશે ઉન્નતિ, વિકાસ. પ્રગતિનો અર્થ થશે ઉન્નતિ, વિકાસ. ન્યાય, मानवता, धर्म हमारा. हिल मिल के लहराए, हिल मिल के यानी मिलजुल कर. विश्व शांति का निशान, निशान यानी चिन्ह. અહીં अर्थ झंडा, निशान यानी चिन्ह. आ पंक्तिओं कवि कहे छे कि राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, कि આપણું કર્મ, આપણું કામ શું હોવું જોઈએ? તો કે संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. શું કહે છે કવિ? કે संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा. हम सब मिलकर प्रगति करें,
हम सब मिलकर विकास करें, उन्नति करें, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। बीजी पंक्तिओं कवि शू कहे छे कि हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा धर्म बने। हिल मिल के लहराए, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का निशान, विश्व शांति के निशान को लहराए, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का निशान को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करे। आ पंक्ति में कवि कहे छे कि संसारनो सौ राष्ट्रों में एकतानी भावना फैलाववी ए ज आपणा सौनुं महाकर्तव्य छे। આપણે સૌ હળીમળીને પ્રગતિ કરીએ, સૌને ન્યાય મળે, માનવતાનું રક્ષણ કરીએ, એ જ આપણો ધર્મ બને। આપણે સૌ હળીમળીને વિશ્વ શાંતિના પ્રતીક એટલે ધ્વજને હવામાં ફરકાવીએ અને એ રીતે આપણે પોતાની એકતા સિદ્ધ કરીએ। તો અહીં આ કાવ્યની સમજૂતી પૂરી થાય છે। હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસ તરફ આગળ વધશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।